Guys, welcome back. Thank you so much ज्वाइन करने के लिए आज हमें और आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं it will be a very interesting conversation, right? तो मेरे साथ आज हमने हैं आमना हुसैन. आमना, welcome. Thank you. Thank you. So आमना, like इससे पहले मैं सारे I spill the beans के who you are, what do you do, all of that. आप अपना introduction क्यों नहीं करवाते हमारे viewers को? Great. Hi. Thank you so much, Ali, for giving me this opportunity. Or firstly, my name is Amna Hussain. Like he just said, I am a foreign trained lawyer. ज़्यादा मेरी हाई स्कूल तक एजुकेशन पाकिस्तान में थी, उसके बाद इंग्लैंड में, और उसके बाद I have been in and out of Pakistan, a little bit time in England, a little bit time in Lahore, and now since 2019 मैं इमिग्रेट करके अब टोरंटो कनाडा में रहती हूँ. Awesome. So, for someone, first of all, I think it's an inspiration for a lot of female ke andar. I think we should have more lead females, venturing out for education, for taking those roles. I have two fronted questions. Did you face any challenge as being a female venturing out alone for international education? एक तो ये, और secondly ये कि what आप पूरी दुनिया घूम के कनाडा ही क्यों? सबसे पहले तो I would definitely say I have faced many challenges. So I will not, मतलब मैं बिल्कुल किसी को नहीं कहूँगी कि बहुत आसान जर्नी है और आप ज़रूर करें, मगर करें ज़रूर, क्योंकि मुश्किलों से डरने से तो मुश्किलें आसान नहीं होती. एंड फर्स्टली अब तो जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मेरी भी छोटी कज़न्स एंड रिश्तेदार हैं, आज अब लड़कियां बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली बाहर जाती हैं, मगर when I went for my education, it was back in 2007, तब ये इतना कॉमन नहीं था. तब अंडरस्टूड था कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हों या जहाँ की भी हों, आप पाकिस्तान में पढ़ेंगी और फिर शायद आप शादी करेंगी और उसके बाद मास्टर्स के लिए आप बाहर जा सकती हैं. So that was the usual trajectory. But I was quite convinced that I do not want to follow that. And after much convincing and here and there, so I was able to. Obviously, a lot of concerns are around finances and stuff as well. Fortunately, I did not have those concerns. But अगर वो भी हों तो scholarship opportunities बहुत हैं. मैं हर लड़कियों को ज़रूर कहूँगी कि एजुकेशन के लिए तो ज़रूर जाएँ, उसके बाद वापस आना चाहती हैं वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान, लिव समवेयर एल्स, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है. सब कुछ चुन के कनाडा ही क्यों? Frankly, it wasn't my first choice, but I feel like it is the best choice Yeah. now. That and the kind of diversity after living in, I've lived in the UK in and out for about 10 years, but I would still say कि रियल डाइवर्सिटी जो कनाडा में है वो लाहौर में नहीं है, और लाहौर में तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर यूके में भी और बाकी जगहों पे भी बिल्कुल नहीं. बिल्कुल. बिकॉज़ आप वो एक साइलोड सा इमिग्रेंट रहता है, वो अपनी ही दुनिया में रहता है, वो 4 जो प्रोफ़ेशंस चुने गए हैं, वही प्रोफ़ेशंस करता है, और आप कहीं भी उसको, लाइक यू वुड सी देम doing deliveries, you'll see them doing other things, not that there is anything wrong with that, but you don't see them rising, which is something that you do see in Canada, which is very not just motivating, but also a goal, right? That आप aspire कर सकते हैं इस तरह. So I would definitely say कि for me, Canada has been the best choice, and I would hope other people would think like that too. कि ये आपने बड़ी excellent point, you raise के in a lot of countries around the world, वहाँ आप देखते हैं कि देसी लोग या मतलब कि people from third world countries वो generally मतलब कि lower tier jobs करते हैं, versus Canada can especially Toronto के अंदर Toronto is the most diverse city. They call it one of the most diverse cities in the world, but North America के अंदर तो it's proven it's the most diverse. Or I mean, you find VPs, CEOs, yourself a lawyer, professionals, dentists, accountants, right? Now you find that they belong to our community or where we come from. Definitely. Yeah. So I'm not, what was your first choice?
यूके एंड दैट वाज़ नॉट बिकॉज़ बस वो एक नोन डेविल सा होता है क्योंकि मैं वहाँ पे पढ़ने गई थी, यस, तो यस, अगर शायद आई एम श्योर अगर मैं यहाँ पढ़ने आती तो मुझे यहाँ का वही लगता, कंफर्टेबल मगर एक और वो जगह थी जिसको मैं पहचानती थी। यस, तो अपने घर के अलावा वो घर लगने लगा था। मगर अब ये भी घर लगता है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं लड़कियों के साथ शेयर करना चाहूँगी, हम लोगों के लिए घर बहुत ज़रूरी होता है। तो मगर और मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी था, मगर घर एक मूविंग कॉन्सेप्ट है। ये समझना बहुत ज़रूरी है एक इमिग्रेंट के लिए। वरना आप घर के बारे में ही सोचते रहते हैं और वो नया घर, घर नहीं बनता। कर नहीं बनता। इट्स इंटरेस्टिंग यू से दैट लाइक हम एक मज़ाक करते थे कि जब हम नए-नए आए थे तो हम पहले पाकिस्तानी न्यूज़ देखते थे। बट देयर वाज़ अ टाइम कि फिर हमने सीबीसी, सीटीवी देखना शुरू कर दिया बिकॉज़ दैट्स वेयर यू लिव राइट यू डोंट आई मीन आप यू आर स्टिल कंसर्न्ड अबाउट पे पहले बैक होम क्या हो रहा है बट देन यू स्टार्ट और आई थिंक दैट्स एन एक्सीलेंट पॉइंट हैं दे स्टार्ट बिकॉज़ वंस यू ओवर दैट मेंटली फिर आप मतलब कि बाकी चीज़ें करना शुरू करते हैं। So I'm not walk us through your journey मतलब कि अगर first of all how easy it is for someone like you who's like well educated but internationally trained आप कनाडा का आपके पास लाइसेंस नहीं था लॉयर का इसी तरीके से one of the biggest challenges कनाडा के अंदर होते हैं कि अगर आप डेंटिस्ट हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशंस के अंदर आपके नहीं होते कनाडा के राइट तो उन प्रोफेशनल्स के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न हैज ऑलवेज बीन कि वी डोंट वांट टू रीस्टार्ट दिस होल प्रोसेस वी डोंट हैव टू री गो थ्रू दिस राइट एंड वी हियर लाइक some amazing stories and some horror stories right people complain कि यार मैं तो मैं तो डबल मास्टर्स हूँ मैंने ये क्या हुआ है व्हाई द हेल दे डोंट इवन केयर अबाउट माय एजुकेशन राइट तो आप थोड़ा सा उसके बारे में भी हाईलाइट करो एंड आल्सो वॉक अस थ्रू योर जर्नी ऑफ एज ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस एंड लाइक eventually practicing in Canada as well. Yes, perfect. That's a really good question because I think that's something that's very relevant to a lot of people जो Mm, फॉरेन ट्रेन्ड हैं। इस पे फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी जर्नी के थ्रू ही बताऊँगी जो कि मेरी ट्रेडिशनल जर्नी है, जो कि आई वुड रिकमेंड, जो कि यहाँ पे यूजुअली लोग करते हैं वकीलों के हिसाब से, इस yeah, प्रोफ़ेशन के हिसाब से। तो उसमें बेसिकली ये है कि आपने अपना यू हैव टू गेट योरसेल्फ असेस्ड, वो डब्ल्यूएएस के वेस के थ्रू जिसको कहते हैं, व्हिच इज़ समथिंग दैट यू डू फॉर योर इमिग्रेशन एनीवे। वो आपको बता देता है कि आपका क्या कितने आपने पॉइंट्स करने हैं, कितना हो गया है, कितना है। वो ही आप यहाँ पे भेजते हैं नेशनल क्रेडिटेशन एनसीए जिसको कहते हैं। उसको वो आपकी वो वेस के थ्रू ही वो उसको रीड अप करता है और वो आपको बताता है। वो आपको बताता है कि आपने कितने कोर्सेज़ आपके शॉर्ट हैं। सही, तो उसमें बहुत सारे रीज़न्स हैं कि वो किस चीज़ से देखता है। वो उस चीज़ को देखता है कि आप कितना आप कहाँ पढ़े हुए हैं, आपकी डिग्री रिमोट थी, आपकी क्लासेस कितनी थी, आपका 4 साल का बैचलर्स है, आपका 3 साल का बैचलर्स है, वो काफ़ी कुछ असेस करते हैं। सही, बट आफ्टर असेसमेंट वो आपको बताते हैं कि आपने ये वाले कोर्सेज़ आपके मिसिंग थे, आपने करने हैं। वो कोर्सेज़ आप उन्हीं के थ्रू करते हो, उनकी एक फ़ी है और रेंजिंग फ्रॉम 300 टू 500, उसको आप अपना होम स्टडी कर सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं है। उसके साथ आप अगर आपको ज़रूरत है तो आप एक पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो क्योंकि वो इतना स्ट्रेनुअस नहीं है। नहीं, उसके बाद मेरे उनको क्रेडिट करके उन्होंने 5 कोर्सेज़ थे जो मुझे करने थे। इट कैन गो अप टू आई नो पीपल हू हैव टू डू लाइक 8, 10, 12 कोर्सेज़ व्हिच इज़ लिटरली mm, डूइंग लॉ स्कूल अगेन। mm, बट वो हो जाता है, आप अपना उस टाइम शेड्यूल करके आप उन इम्तिहानों को दे सकते हैं और अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा वही, क्योंकि इट्स जस्ट अ रिपिटिशन ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन। वो करके आपने बार का इम्तिहान देना होता है। बार ऑब्वियसली वो तो एज़ ऑल लॉयर्स नो व्हेरेवर you'd move you'd have to take a bar exam. बारिश, Even even if I from today move from Toronto to Alberta, I would have to take the Alberta bar exam. तो वो तो हर जगह का होता है। mm, अब वो एग्ज़ाम थोड़ा-सा मुश्किल है और उसके लिए आपको बड़ा डेडिकेटेडली थोड़ा पढ़ना पड़ता है। वो पढ़ के आपको फिर ऑब्वियसली अगेन आई वुड से इट्स नॉट लाइक लोगों ने नहीं किया हुआ, मैंने खुद किया हुआ है। तो आई mm, वुड से कि एक आधी दफ़ा अगर नहीं भी पास होता, दूसरी दफ़ा हो जाता है। तो उसमें डिसहार्ट होने वाली बात नहीं है, आप दोबारा दें, दोबारा पास हो जाएगा इंशाल्लाह। इट्स जस्ट अबाउट क्रैकिंग अ सिस्टम रियली। yes, So you do that and then you get licensed.
After that, even it's not easy to find a job, do a job, what you're gonna do. But I would say you can go through that route. Yeah. फाइनली जो दूसरा है कि लोग और क्या कर सकते हैं कि डबल मास्टर्स और ये आप आपने बात की उसके और बाकी आपको क्या फील होती है सी आई फील लाइक इन लाइफ विद दिस अप्रोच एंड एज एन इमिग्रेंट यू हैव टू सी कि अब आप ये न्यू बर्थ हो गई है Yeah. तो अब आपने देखना है कि वेयर इज योर ट्रेजेक्टरी लाइंग Yeah. you literally have to be and you know you're guided somewhere at times in a certain place some people are guiding you or you are finding an opportunity or the world is changing and you're seeing some opportunities so I feel like I would really recommend anybody who comes here just be flexible you know Mhm. don't put yourself in a position where अगर मुझे ये नौकरी नहीं मिली तो मैं कोई नौकरी नहीं करूंगी Yeah. या नहीं करूँगा। You know, like be Mm. open to opportunities Yeah. और maybe you'll be surprised. Maybe you'd enjoy that even more. Maybe that will give you what you wanted. तो वो बहुत एक ओपन माइंडसेट रखना बड़ा ज़रूरी है। जैसे आपने कहा है उस तरह मैंने भी देखा है कि कुछ लोग होते हैं who feel very strongly about like you know अपनी डॉक्टर की डिग्री, अपनी इंजीनियर की डिग्री and then they somehow don't even get the jobs that they could have gotten had they been open to something else. Something else, yeah. So I think that's an excellent point, Amna, that uh, career की trajectory linear नहीं हो सकती. Career की trajectory can be multi-dimensional, right? अगर आप nurse हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप nurse ही बने कनाडा में आके. You can be a laboratory technician, which pretty much makes exactly same as the nurse, right? Um, I think you made an excellent point कि flexible होती है even for a lawyer अगर वो foreign trained lawyer है यहाँ पे आके part of it is like एक तो legal route को ले सकते हैं but part of it वो same skill set को लेके किसी और industry में भी जा सकते हैं एब्सोल्युटली एंड right आई थिंक लॉयर्स का तो खास तौर पे बहुत ज़्यादा डाइवर्स स्किल सेट है हमें लिखना भी आता है हमें पढ़ना भी आता है हम अटेंशन टू डिटेल भी है हम क्लाइंट सर्विस जॉब भी कर रहे हैं टेक्निकली इट्स अ क्लाइंट फेसिंग जॉब सो वी आर supposed to be good with clients we are supposed to be trustworthy we are supposed to be good on your feet we are supposed to be fast thinkers we are supposed to be good with deadlines so look within yourself and you'll find that you have this plethora of um, excellent transferable skills um, which will take you places so sometimes don't maybe don't limit yourself right maybe don't limit yourself. excellent point like don't limit yourself guys अच्छा like हम ना in terms of यहाँ पे आप और क्या आपको challenges थे in terms of like settling down here okay and and why Toronto as well, right? Like was Toronto was a default choice for you, or it just happened to be that things aligned well, like आपके लिए opportunities वहाँ पे generate हुई तो इसकी वजह से आपने Toronto choose किया. तो also talk about the selection of the city, what was the reasoning behind it, and the first part was like कि जब यहाँ पे आए तो और क्या challenges आपको face करने पड़े beside आपके credentials को like you have to get re-licensed. Um, First things I would definitely say कि एक तो I was lucky enough कि वो जो पॉइंट सिस्टम है उसके हिसाब से मेरे पॉइंट्स इतने बन रहे थे कि मैं अपनी फर्स्ट चॉइस में जा सकती थी तो दैट इज़ अ वेरी यू नो पहले कंसर्न्स तो प्रैक्टिकल कंसर्न्स होने चाहिए सब लोगों के जो भी सोच रहे हैं इमिग्रेशन के बारे में कि आप अपना पहले चेक करें कि आपकी एजुकेशन उन चीज़ों के हिसाब से आपकी एज के हिसाब से वो जो सारी लिस्ट है उसके हिसाब से आपका क्या बनता है पॉइंट स्कोर क्या बनता है और वो स्कोर आपको कहाँ लेके जा सकता है एज पीपल आर अवेयर ऑन्टेरियो का स्कोर बहुत हाई हो चुका है बिकॉज यहाँ पे Right. इमिग्रेंट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है Yes. मुझे सर्दी से बहुत डर लगता है तो मेरे लिए तो टोरंटो भी बहुत बड़ा स्टेप था तो मैं उससे आगे जाने का तो सोच ही नहीं सकती थी तो आप वो बोलते हैं कि जब तक अल्बर्टा तक ठंड इंक्रीज होती है फिर आप अल्बर्टा क्रॉस करते हैं बीसी में आ जाते हैं तो ठंड गिर जाती है फिर राइट yeah I बट guess इट it's the वाज pinnacle right like I यस but I don't know like I would definitely say I things are kind of aligned for me I had some personal affiliations and family here so it just felt like if Canada then Toronto maybe but if that if I had a wider choice maybe I would have liked to go to Vancouver it looks really pretty गॉट इट या एक्चुअली लाइक सो
like I assume कि आप Ontario के PNP के प्रोग्राम के अंदर हैं इस वजह से you happen to choose Ontario as a source code, right? Express entry, okay. And also एक चीज बड़ी आपने इंटरेस्टिंग की कि मैंने बहुत सारी one of the biggest reasons जो मैंने लोगों को सुना है कि जो कनाडा में सेटल नहीं हो पाते या सक्सेसफुली इंटीग्रेट नहीं कर पाते कि उनका सोशल सर्कल नहीं होता, राइट? यहाँ तो वो बना नहीं पाते नया, राइट? वो स्ट्रगल करते हैं नई रिलेशनशिप्स फॉर्म करने के अंदर। um, तो वन थिंग यू सेड कि which was very interesting, आपने बोला कि I had some family and people I knew. What was that also a big reason, and also how that impacted your choice? मतलब कि आप जो नए लोग देख रहे हैं आने वाले हैं, how big the social circle, like how much contribution does it have कि आप successfully integrate हो जाते हैं society के डेफ़िनेटली आई फ़ील लाइक आपकी फ़ैमिली हो तो बहुत ईज़ी होता है, मगर ऑब्वियसली इफ़ यू आर कमिंग विद फ़ैमिली वो भी ईज़ी होता है बिकॉज़ यू आर लिटरली कमिंग विद योर सपोर्ट सिस्टम। बट आई डू थिंक यू मेकिंग दैट ट्रांज़िशन फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट थोड़ी लोनलीनेस के लिए आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए और उसको शुगर कोट नहीं मैं करूँगी क्योंकि इस तरह वाला सीन यहाँ पे नहीं हो सकता कि आप बैठे हैं और शाम को साथ वाले से कोई चलता हुआ आ जाएगा और समोसे की प्लेट आएगी और आप बैठ के उसके साथ चाय पी लेंगे। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। So I feel like that you have to be a little bit prepared for that. That's not what it's going to be like. Again, I would say the more flexible you are, the more agile you are, आप उतना बेहतर सेटल हो जाते हैं। और अंदर? जैसे हर चीज़ में वक़्त में लगता है, रोम वाज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। तो आप ये अपना सोचें कि आप जिस जगह से भी आ रहे हैं, वहाँ पे 25, 30 35 जितने भी साल आपने गुज़ारे हैं, वो साल आप गुज़ारें यहाँ पे और फिर बात करें कि आप सेटल हुए हैं कि नहीं। यू नो सो आई थिंक मतलब 6 महीने के बाद ये कहना कि मेरा दिल नहीं लग रहा, तो 6 महीने के बाद तो किसी का दिल नहीं लगता। You've literally uprooted your life, you know? So give yourself a little bit of credit for doing that and give yourself a little bit of space to socially grow. And obviously, people who have kids, आपके बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, you meet some mothers, you get to know some people. आहिस्ता आहिस्ता you go back to work friends बन जाते हैं. आहिस्ता आहिस्ता आपका social circle grow करता जाता है. And obviously, it all depends on you, how much effort you make. Um, मुझे बातें करने का शौक है तो मेरे मेरे लिए थोड़ा आसानी से हो गया था मगर आई नो पीपल हु स्ट्रगल्ड एज़ वेल सो आई विल नॉट डिनाई दैट पीपल डू स्ट्रगल पीपल डू टेंड टू क्लिंग विद जस्ट ओके आई विल जस्ट नो दीस पीपल सो आई विल जस्ट मीट दीस पीपल बट जो भी कुछ आपके हैं आपकी मस्जिद मंदिर जहाँ पे भी आपके सोशल सर्कल्स वहाँ पे बनाना चाहते हैं thing be open to You. all those things as well work friends hain religious friends hain everything right वैसे colleagues hain तो be friendly and Mhm. I would definitely say Canada again I would say again if you compare it to UK like whenever I would come and I would tell people even at the grocery store या कहीं पे भी कि मैं भी 2 महीने हुए आई हूँ या मैं महीना हुआ आई हूँ तो लोग were very, very hospitable. Mhm. I've not seen that in any other country. People were literally like, "Oh, welcome to Canada," Yeah. and they were nice. They were kind. People who used to just be like, "Okay, check up on you." Like it is a good, friendly atmosphere. Or because बहुत नए immigrants भी होते हैं, तो they are very okay with welcoming people as well, and they're all like, हम भी अभी आए थे, हमने ऐसे किया था. They share their experiences. It's definitely it's not rosy, Yeah. but it's definitely people make it easier for you. Definitely. बिल्कुल, क्या एंड वो हम बोलते हैं कि पीपल मेक द प्लेस। सो अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, आसपास के लोग अच्छे हैं आपके पास, दे ट्रीट यू रिस्पेक्टफुली, दे ट्रीट यू फेयरली। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स के कनाडा में हम बोलते हैं कि यहाँ पे रेसिज्म है, अगर बहुत मतलब कि है भी तो बहुत कम है, टू अ पॉइंट के इतनी सरफेस लेवल पे आपको नहीं दिखती इन मेन स्ट्रीम, राइट? और आई थिंक बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन तो बहुत अच्छी है, राइट? इन टर्म्स ऑफ हाउ पीपल ट्रीट ईच अदर। So I'm like, one of my last few like last questions, like, so as a woman, right? How easy it is, क्योंकि ये तो हमें पता है कि in terms of पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बहुत सारे countries के अंदर women have very particular challenges, मतलब कि वो openly operate नहीं कर सकती society के अंदर, या यहाँ बहुत challenges होते हैं। So
being a female, right, and venturing it out not only for an education. So how's that? Number one thing. Number two thing is that अगर कोई कनाडा आने का सोचता है तो क्या आपके पास एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है कि आपने इंटरनेशनल एजुकेशन ली, देन यू डिसाइडेड कि आपने कनाडा आना है, तो क्या वो एजुकेशन पाकिस्तान में ही लें या पाकिस्तान से बाहर लें? आपका उसके अराउंड क्या पर्सपेक्टिव है? सो मेरा तो ये लाइक आई सेड डायरेक्ट पाथ नहीं था, बट अगर कोई बहुत यंग है और उसके पास फाइनेंसेस और ये चीज़ें हैं और वो सोच सकता है अभी पढ़ने का, तो आई वुड डेफिनिटली से कि यहाँ पे बहुत वैल्यू किया जाता है बीइंग इंटर्न, मतलब कनेडियन एक्सपीरियंस और कनेडियन एजुकेशन। तो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप अगर कर सकते हैं तो एक मास्टर्स डिग्री या कोई ऐसी अफिलिएशन यहाँ पे आप शुरू हो जाएँ करना within, and then that kind of directs your trajectory to jobs as well, which so that is definitely, I would say, कि that is the easiest thing, which बट मेरी क्योंकि एजुकेशन भी कंप्लीट थी और सब कुछ कंप्लीट था, मतलब अ, तो मेरे लिए सेंस नहीं बनती थी कि मैं मज़ीद अब और पढ़ूँ, and I एजुकेशन। needed to just like I have 2 masters, I had my degrees, and it was already from another foreign institute. So it wasn't like कि मुझे कोई foreign थप्पा चाहिए था. But यस। definitely I feel like अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीटली पाकिस्तान की है, तो you would really benefit from doing maybe a short course or 6 to 8 months का कोई डिग्री जो कि जिसका कोई पाथवे हो, बट आई वुड डेफिनेटली से कि थोड़ी इंटेंशनैलिटी होनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ, आई नो लोग बहुत एडवाइस देते हैं एंड एवरीथिंग, बट अपनी रिसर्च करें और देखें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। और आई वुड डेफिनेटली से कि इन्होंने Canada has nailed its immigration policy because you've got actual smart and educated immigrants. It's not like they've picked up immigrants from anywhere. There, you've got the smartest minds here, um, in their diversity as well. So, you if you cash up on that, check up on your network, do some intentional thinking कि मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ। एज़ अ फीमेल जो आपने बात की, वो तो चैलेंजेज़ आपको हर जगह फेस होंगे। यहाँ भी फेस होंगे, घर में भी फेस होंगे, पाकिस्तान में भी फेस होंगे, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा फेस होंगे। तो उसको तो आपने ना एक टच ही नहीं करना प्लेथोरा बॉक्स को, कि यस। अब डोंट डोंट विक्टिमाइज़ योरसेल्फ ऑन दैट, आई वुड से। um you can use it to your advantage, you can use it to your disadvantage. uh, if you have that mindset, it can be actually great because जितनी जल्दी आपको recognition मिलती है as a female, वो भी एक प्लस पॉइंट है। यस। um, like I know places where I'm the only colored female, and I'm the only female, forget colored female, तो वो तो like I mean men cannot say that, यस। so they're never the only man in the room. क्लिक आमना, यू मेड एन एक्सीलेंट पॉइंट। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं कि जो ईडीआई का एक मेजर मैंडेट है इक्विटी, डाइवर्सिटी Right. इंक्लूजन का, राइट, तो इसके बारे में थोड़ा सा टच करो, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात की। आई थिंक in fact being in a female, I think it's a competitive edge when you're applying in certain situations. Absolutely. Like, I feel like we come from discriminatory mindsets because obviously, unfortunately, that's what we've faced. But it you can work towards it can work towards you as an advantage. Like आपने जैसे EDI की बात की, equality, diversity, inclusion, उसमें most companies here are mandated to hire a certain amount of women, and they want to hire colored women, they want to hire immigrants, they want to show that inclusiveness. So maybe in a way, like, and frankly in my experience and the people I know also, um, बीवियों को जॉब्स उनके हस्बैंड से पहले मिल जाती हैं। Film jati, yes, yes, और उसका रीजन जो मैंने आपको यही कहा कि अ मैन विल नेवर बी द ओनली मैन इन द रूम। So yes, the people they're competing with are usually, it's a larger pool. So I feel like educated women are definitely wanted everywhere. They're wanted in Pakistan also, but because of the discriminatory features, आपको कम से कम positive, कभी-कभी positive discrimination यहाँ पे face होती है। तो use that. yeah. Why not? Excellent.
Excellent point. Excellent point. So I'm the last question. I know हम networking में अक्सर लोगों को होता है network. आपने ये 3-4 बार बोला कि tap into your network. आपके आसपास लोगों के पास access है. You're one person away from your next opportunity. और the reason आप और मैं connected हैं कि we connected through LinkedIn, right? This is the power of networking. You're in Toronto, I'm in Alberta, completely different markets के अंदर है, right? But this is the power of networking. तो पहली बात तो ये बताइए कि how people can connect and network with you. I am available over LinkedIn. You can always shoot me a message or ask me a question. So we can. I'm very accessible like that, and I came here like that. I am very thankful to people like Ali, who I reached out to, and I'm sitting talking to him today, and not just him. There are a lot of other people as well, because frankly we are all in this together, और हम सारे एक दूसरे से बेनिफिट कर सकते हैं। मतलब कोई भी बंदा जो जिसकी जॉब हो या ना हो, सब एक दूसरे से बेनिफिट कर सकते हैं। सो आई थिंक एंड टैपिंग इनटू योर नेटवर्क का भी मतलब ये है कि आप अब कहते हैं कि भई मैं तो किसी को भी नहीं जानता, मैं तो आया ही ऐसे हूँ। बट आप दोबारा सोचें इस बारे में कि आप वाक़ई क्या किसी को नहीं जानते। आप शायद आपने क्या ट्राई किया है, आपने जा क्या लोगों को से पूछा है कि मैं ओपन हूँ, मुझे किसी से मिलाएँ, मुझे किसी से कनेक्ट करें, मुझे किसी से बात करनी है, और क्या आपने अपने ऑप्शंस कंसिडर किए हैं? और अगर आप करेंगे तो आई एम श्योर यू विल कम अप विद अ कपल ऑफ पीपल हू यू कैन कनेक्ट विद। एंड लाइक आपने ये बहुत अच्छी बात की कि आप अल्बर्टा में हैं, मैं टोरंटो में हूँ। ये सोच के अपना नेटवर्क ना देखें कि या मेरे 500 मीटर के रेडियस में कोई बैठा है कि नहीं। Yeah, So, excellent point. uh, I think now we live globally, we work remotely, we work from home. You could be connecting with someone in New York, in Washington, in anywhere. Like even actually, frankly, come back to Canada and connect with someone back in Karachi or Lahore, and they'll connect you to someone sitting back there. So do not limit when I talk about network. Network does not necessarily mean a radius. Network doesn't mean radius, network doesn't mean a country, and network doesn't mean your city, and network also doesn't mean like someone in your professional, right? Because you are you're one opportunity away from your next big thing. And I think this is like bang on. हम लोग make sure करेंगे कि आमना का LinkedIn जो profile link is also in the description wherever you're watching this video, और है ना LinkedIn search Amna Hussain, right? आप search कर सकते हैं आमना को, and I'm sure that she'll be very open any questions, especially अगर आप Canada आने वाले हैं, internationally trained lawyer हैं या interested हैं. I'm sure that you will have some questions from Amna as well. And I'll have Amna to check YouTube comments as well कि अगर वहाँ पे कोई question आता है तो I'll be happy to मैं उन्हें forward भी कर दूँगा, right? Amna, thank you so much. आज आपने मुझे हमें time दिया और हमारे basically viewers के लिए you gave away some amazing information. Thank you, Ali, for inviting me. Thank you for thinking of me. And thank you for always being available. So, you should also post all those questions for Ali. Ali is a little encyclopedia. उनको बहुत पता है, वो यहाँ पे भी host हैं, इसलिए मैं उनसे सवाल नहीं कर सकती. मगर definitely, if you have immigration questions, I think ask Ali. Yes. Thank you. Amna, and thank you so much for everyone, right? अगर आपको कोई भी question हो, please comments में जाइए, right? Okay. Or if you're interested in learning more about it, आप Logic, LAWTIQ, logic.com पे जाइए, and we'll be happy to help you. Take care. Bye bye.